नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज। ये कंपनी जो है साउथ की लीडिंग डीलरशिप कंपनी है जो मारुति, होंडा, टाटा मोटर्स, सीवी, जेएलआर, भारत बेंज इन सब गाड़ियों को बेचती हैं। और मेरे साथ आज जो है वो नवीन फिलिप हैं जो कि एमडी हैं कंपनी के, और जॉन वर्गीस जो सीएफओ है कंपनी के। इनका आईपीओ जो है मार्च 12 को खुल रहा है और 14 को बंद होगा। 280 से 295 के बीच का प्राइस बैंड है। 250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 351 करोड़ का उसका ओएफएस है। तो टोटल जो आईपीओ साइज़ है 600 करोड़ का है। नवीन जी नमस्कार, एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, आप अपने बिज़नेस के बारे में ज़रा बता पाएंगे कि कितना बड़ा बिज़नेस है, कितने डीलरशिप्स हैं और कौन कौन से ओईएम्स को आप सपोर्ट करते हैं? So basically, Popular, which we are a 70-year-old company, 7 decade का है. We handle, as you mentioned, all the OEMs that you mentioned, and also we do Ather and Piaggio in terms of EVs. In terms of size, we spread across 4 states. Last year we serviced approximately 1 million vehicles, and that is our strength in terms of the servicing. We sold approximately 60,000 vehicles, of which 48,000 were new vehicles and about 12,000 used vehicles, as in pre-owned cars as such. So this is our size of the company. As we mentioned, we spread across 4 states: Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, all high growth states and high penetrated states as such. And as we move forward, we'll be looking at the other states also. John Verghese, and in terms of turnover, last year FY23, we have 5,000 crores. ओके, जॉन जी ये बताइए कि आप 250 करोड़ रेस कर रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ करेंगे आप? इसमें से करीब 190 करोड़ जाएंगे अपना लोन्स मिटाने के लिए, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा। सो हम अपना इंडस्ट्री जो में है, हम लोग अपने बुक्स में व्हीकल्स अब खरीदते हैं ओईएम से, सो वो अपना इन्वेंट्री में है। सो दैट इज़ व्हाट वी टेक इन्वेंट्री फंडिंग। सो मैक्सिमम अपना जो लोन है, नियरली 75% ऑफ लोन अपना इन्वेंट्री फंडिंग के लिए है। सो टिपिकली जब क्या होता है कि हम लोग कभी 25-30 दिन का इन्वेंट्री, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स दैट कि अबाउट 25-30 दिन का इन्वेंट्री हम लोग रखते हैं, एंड विच इज़ अ रिफ्लेक्शन, अगर लोन ज़्यादा बढ़ गया दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ कितना हम लोग व्हीकल्स हम लोग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में सेल करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आप अगर ROE अगर देखेंगे, जो आप इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड टू नो दी रिटर्न ऑन नेट वर्थ, तो वो अगर देखा जाए हम लोग का रिटर्न ऑन नेट वर्थ और करीब लास्ट ईयर मार्च 23 में अबाउट 18% रिटर्न नेट वर्थ में हुआ है, और इस साल सितंबर में 6 मंथ्स के लिए अबाउट 10% रिटर्न नेट वर्थ हम लोग को मिला है। ये जो आप लोन लेते हैं, इसमें क्या आपको कंपनियों से क्रेडिट पीरियड मिलता है या आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है? इन्वेंट्री के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि जो Credit period, if we get credit period. इन्वेंट्री के लिए जो आपको आप लोन लेते हैं वो टिपिकली ये बैंक्स जो है, सो वो बेसिकली अगर सेवरल बैंक्स है जिसके साथ हम लोग का अरेंजमेंट है, वेर इन डिपेंडिंग ऑन जो जब नॉर्मली सेल करने के लिए जो 30-40 दिन रखते हैं, सो इन्वेंट्री का बैंकिंग का लोन जो भी उसी हिसाब से है। सो नॉर्मली 45 डेज टू 90 डेज का पीरियड देते हैं, लेकिन उसके आगे अगर उसके पहले हम लोग अगर सेल करते हैं उसको हम रीपे करते हैं। He also wants to know credit from manufacturers. क्रेडिट फॉर मैन्युफैक्चरर्स, हम लोग का डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स है। मारुति में टिपिकली जो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से गुड़गांव से कहीं से जहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उन लोग एक TVP बोलते हैं, ट्रांजिट व्हीकल पार्क बोलते हैं, बैंगलोर में है, क्योंकि हम लोग साउथ बेस्ड है। सो बैंगलोर में उन लोग अपना व्हीकल्स रखते हैं। सो अराउंड 14 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड हम लोग को मारुति से मिलते हैं। उसके बाद नॉर्मल इंटरेस्ट रेट हम लोग चार्ज करते हैं अप टू 45 डेज, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हेन वी टेक द व्हीकल फ्रॉम द TVP। अब नवीन जी ये बताइए कि आपका ग्रोथ काफ़ी एग्रेसिव रहा है। आपने एक्विजिशंस भी की हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के रूट के थ्रू किया है, और आपने केरला से शुरू हुआ है और फिर तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी आप आए हैं, और मल्टीपल ओईएम्स के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? कितने और आप
अपने डीलरशिप खोल सकते हैं या ऑथराइज सेंटर्स या सेल्स पॉइंट्स खोल सकते हैं या फिर शोरूम्स खोल सकते हैं, वो ग्रोथ का कितना है आपका? So I'll just give you industry figures and then give a comparison. So if you look at India, we do about approximately 4 million passenger vehicle sales. We are currently selling about close to, in terms of about passenger vehicles, about 40,000. Okay, so the growth in terms of consolidation of dealerships is huge. There are about 2,000 odd dealerships across all manufacturers in terms of passenger cars. If you look at typically, and I won't like to try and see a comparison with what the US market is. US market sells about 14.5 to 15 million vehicles as compared to 4 million vehicles. If you look at India's growth in terms of economy and all that, today from 4 million vehicles, the industry reports of CRISIL and everybody else talks about that ये 4 million, 8 million हो सकता है 2030 तक. And that is sort of, so that's a 100% growth in the next 5 to 6 years. If you look at US market, the consolidation of dealerships started happening much earlier. There in a 15-16 million market, the largest dealership sells about 350,000 vehicles or 300 odd thousand vehicles, and we are currently at only around 40-45,000 vehicles. So if you look at India as a growth industry, and if you look at the economic growth at 7 to 8%, and usually the automobile industry growth is slightly higher than the GDP growth as such, that's the sort of growth that we would anticipate, just organic. And we are also looking at inorganic growth in terms of acquisition of dealerships. So that way, the growth, what we are expanding and the future expansion is very robust numbers. So, Just to add what to Naveen yeah, was बोलिए. saying, यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे कम डीलरशिप्स हैं जो more than, I'm sorry, which are operating more than 4 or 5 states, या जो more than 100 outlets हैं. We are one of those few. Number one. Number two, we are in the first top 6 dealerships in India in terms of volume as far as FY23 is concerned. So there is, and consolidation is the way forward, and we would like to take part in that growth path. ये भी बताइए नवीन जी कि आप ईवी स्पेस में हैं और यहाँ पर कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के ईवी स्पेस में हैं और आगे जाते हुए काफ़ी सारे कंपनीज इंक्लूडिंग मारुति और होंडा काफ़ी ईवी व्हीकल्स लेकर आने वाली हैं, तो वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी हैं और क्या ईवी में ऐसा डीलर आपको हायर मार्जिन मिल सकते हैं या ईवी के मार्जिन्स भी सिमिलर ही होते हैं एज कंपेयर टू ICE vehicles? So EV space, let me start with 2-wheeler and 3-wheeler where the disruption in terms of EV would be higher. So if you look, we represent Ather in Kerala and Tamil Nadu, and there the penetration of EV in the 2-wheeler space is approximately about 12 to 13%. But overall India is, I think, about under 7% in terms of EV penetration. 3-wheeler, the EV penetration has not been as robust as the 2-wheeler, also because of FAME 2, FAME 3 subsidies, some ambiguity in the subsidies as such. And CNG is doing better in terms of 3-wheeler. If you look at passenger vehicle industry, today the penetration is less than 1% in terms of EV. Today Economic Times had a report in terms of Mercedes-Benz EV penetration, and they sold about 700 vehicles out of 17,000. So in the luxury vehicles, about under 4% as such. If you look at the globe per se, in certain markets EV penetration is high, but this year the EV sales has been lower. Now coming to margins, in terms of areas where the EV penetration is higher, the EV margins in terms of vehicle sales margin is not very different. It's slightly higher, a couple of basis points as such. But if you look at service, actually the cost of service is higher in terms of EV and in terms of body shop repairs. And since Popular's entire focus is on terms of service and growing the service business, today we have serviced 1 million vehicles. And as EVs come in and the number of vehicles on the road, and I'm saying 4 million to 8 million in terms of sales growth happens, then the car park also increases substantially. So if you look at number of vehicles that are there to be serviced, both EV and non-EV, and in terms of body shop repairs, everything, we expect a huge growth, and we would like to, and we would participate in that growth aspect. आप इस सेगमेंट को कैसे देखते हैं? बिकॉज ईवी जब आप लेकर आएंगे तो इंस्टेड ऑफ सर्विसिंग जो होगा वहाँ पर बैटरी स्वैपिंग ज़्यादा होगा, या सॉफ्टवेयर अपग्रेड ज़्यादा होगा उस व्हीकल का, तो आप क्या बैटरी स्वैपिंग के बिज़नेस में भी जा रहे हैं? आपके ऑथराइज सेंटर्स या जो सर्विस स्टेशंस हैं क्या दे आर फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं, फुल्ली इक्विप्ड हैं ये बैटरी स्वैपिंग के लिए भी आगे जाके?
So battery swapping on the passenger vehicle side would still take a longer time. Even on three-wheelers, we do battery swapping, but the number of vehicles that we do on battery swapping is very low. But if you look at in terms of EV, in terms of service and all that, if you look at the Ather vehicles, that हम करीबन 300 गाड़ी बेचता है हम हर महीने Ather का, and all those 300 vehicles come back to us for service because the sort of technology that is required for service of the EV is much higher than the ICE engines per se. So if you look at a typical two-wheeler ICE vehicles, then probably only about 20% or 30% comes back to the dealership for service. Whereas if you look at EVs, 100% is coming back for service. And this we have seen even in Jaguar, Land Rover and all the vehicles that we sell as EVs. So as EV penetration increases, the number of vehicles that come back to organized dealerships for service would be far higher. And that itself is a huge growth potential. नवीन जी और But जॉन whatever जी, the opportunities be in terms of EV, we would partake in all those opportunities. नवीन जी और जॉन जी, आज आप NDTV प्रॉफिट हिंदी से बात की आपने और IPO अड्डा में आए, धन्यवाद। आपका IPO जो है मार्च 12 को खुल रहा है और 14 को बंद हो रहा है। 280 to 295 का प्राइस बैंड है और ये इशू साइज़ जो है 601 करोड़ का है, जिसमें 250 करोड़ का फ्रेश इशू है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए।